Well, what a feeling it was for Ihsanullah. Once again, his 10th wicket of the HBL PSL in only 3 games. Oh, and that archery celebration, it certainly is something to behold. And once again, it seems the Multan Sultans have found the next thing in fast bowling. He's been absolutely brilliant. And if you've just joined us, well, you've missed an absolutely cracking match between the Multan Sultans. They took on Peshawar Zalmi and they were victorious in their second of third match of the season. As we take a little look at the match summary, well, it really was a high-scoring affair. 210 the Multan Sultans put on, and in reply, Peshawar Zalmi, well, it looked like they were going to get close at one point, but consistent wickets certainly did the damage for them today. Amazing performances from Rilee Rossouw, once again 75 off just 36, and then he was supported by Rizwan and Miller. Certainly was a fantastic performance from the batting lineup and the bowling lineup as well. The Multan Sultans, they went through 7 bowlers today, and we're joined by one of them, Carlos Brathwaite, alongside me, of course, with Simon Dool as well. And Brathwaite, straight into your work for you today. They flung you the ball, and you're really economical in your 1 for 22 off your 3. Yeah, it was a difficult one for a bowler, won't lie. We spoke at the half about trying to get early wickets, but at the stage where I came into bowl was more about controlling the run rate. Harris and the lefty Ayub, Saim, quality player. They just found it difficult. We spoke about bowling our best ball, and even then they were carting it to all parts. So it was important to, I guess, kind of break the rhythm. Thankfully he could done that, but Ihsanullah was exceptional, and Osama Mir in the middle getting key wickets as well. And you're straight into the wickets as well, as we take a little look at when you bowled Wahab Riaz there. Is there any better feeling as a fast bowler? Yeah, I just like to get wickets. I don't care how they come. Caught long on is enough for me. But when you deceive the batter, top of off, as they say, and then a little celebration to Dahani. That was one of your variations, Carlos. We've seen a few. You've got the knuckleball. You've got that fairly much undercurrent. It just sort of floats out nicely. Swings away a little bit from the lefties. There was one that swung, and it was like, I know. whoa. I was on commentary. I was like, wow, that's I was as surprised as the batter, but the late great Shane Warne said natural variation. If I don't know, they don't know. But yeah, it's something that I work hard on, the knuckle. I think when people face me, they know I'm going to come hard length as my stock. So how can I steal the ball here and there with a couple change-up, couple slow balls. And today that ball actually worked. It took the pace off, it stopped their swing, and then it was more about dropping my ego, forgetting, almost getting wickets, and understanding that at that point in time, once I stop them from scoring, hopefully it leads us to get a wicket. Bowling a lot more obviously now. You've come through that shoulder injury that sort of plagued you for quite some time. Does that just give you the confidence? Obviously you bowl well in Dubai, come in here. Does it give you the confidence to just do what you're doing now? Yeah, so come back off the shoulder surgery in the summer, bowled well in the blast, but finished well more so than having a complete tournament. And then ever since then, I think the hunger of being out of the game. I've enjoyed being next to you, Dooley, but I'm still thinking I got a few more years out on the park. So from watching cricket and, you know, still believing from saying it and seeing it that I can contribute, it kind of create a little bit of a fire, a little bit of a hunger. So training a little harder, started some yoga, trying to keep the body in better shape. And then I guess as you grow and mature, you kind of see the game a little differently as well. So I think the culmination out on the park is from a few different things other than just obviously happy to be back on it. I wonder if we can show that ball again. I want to ask you, for those that haven't sort of seen a lot of you bowl, where did you learn to bowl, and what's with the little pinky? I want to sort of talk about it, because it's very weird for a lot of people who coach bowling to see that pinky stick. How did that come about? And what, I mean, we're trying to get it from behind and have a little look. I don't know whether we can see it close enough on that. But why does the pinky stick out? And how did you learn? And how did you sort of come about this action? I have no idea where it comes from, to be honest. I didn't even realize that I used to do it. And Roddy Eswick, who was my PE coach at secondary school and bowling coach at West Indies, one day he was just like, Carlos, like, hold the ball properly. And I was like, huh? What? What? That's how I hold it all the time. And he actually tried to force me to keep the pinky on. Yeah. They try and tape it down for you, or what? And it felt so weird. One lie. I don't know, for some reason, I don't know if it relaxes my wrist. It's just one of those things that you do, and it just feels natural. It doesn't happen with the slower ball. So by the time I get to the top, with the slower ball,
I think it's back on. But when I run in like that, for some reason, it just the wrist just feels. I have no idea why I do it. For all the youngsters at home, do not try it at home. I was going to say, it's very English of you, isn't it? Little pinky with your tea, with your tap-out tea. Moved to England a little while back, and it's helped my coffee, my Americano drinking skills. But yeah, and to be fair, I spoke to Jake Ball all the time, and he actually thought that I used to do it as like a change-up, because I was speaking to him about his change-ups. Very skillful ball, and he was saying that with the knuckle, he actually runs in, or at that time at least, he used to run in with every ball with one finger on the seam, one knuckle bent. So if you watch him and you watch the hand long, you think every ball is a knuckle ball. Right. Some will be pace on, some will be knuckle. So that's almost like creating a variation out of nothing, keeping the batsman guessing. And I was like, a bit too clever for me, Jay. I just feel comfortable doing it this way. It's a good distractionary technique, if nothing else, isn't it? A little pinky coming at you at 130, 140 clicks an hour. Thanks for the 140 as well. It's not Isanula. We've got Carlos Brathwaite here, not Isanula. Exactly. At one point it was 140, right? Back me up here. Back in the day. Back in the day. Yeah, when Adam was a lad. Oh, it was a great win for the boys as well today. Obviously, you know, it was a big total that you got to defend, but it did look like they were going to get close at one point today. So credit to the fielding as well from the boys. You truly sort of stepped up to notch about that 10th over onwards. Yeah, we did, and it was, to be honest, it was clear plans. As I said before, the original plan was bowl your best ball, no width. I think from their bowling innings, we realised that they gave us a few hit-me balls. They probably didn't execute as well as they wanted. They were a bit wide. Excuse me. And then we thought they went death too early. So it took the wicket out of the game. And when I bowled the slower balls, we realised actually, whether the wicket or the batters, bowling pace off actually stops the swing, breaks their rhythm. So how can we implement that into our plans? And then it became almost as though we were bowling more slower balls than pace on balls. And once we broke the rhythm, even Polly coming in and rolling his wrist over a few, breaking the rhythm then, which contributed, I think, to the wicket called Cadmore, everything just started to steamroll in that way. It's all about momentum, isn't it? One tiny little moment can completely change the tide of the game. But hearing that cough, I think I'm going to let you get out of here. It's a little bit cold. The weather is dropping. Thank you so much for your time, Carlos. It was great to have you back in the HBL PSL. But one name that you did mention just then, Saim Ayub, he was just fantastic, and he did threaten at one point to take the game away. He was our master blaster of the match. Talk about a young talent taking the game on. He was just brilliant today. 53 of 37 balls, 3 fours, 3 sixes. He was just brilliant the second he came on, wasn't he? The way he started here, and I was just blown away. The first shot through the covers, then it just use of his feet, that little nonchalant flip down to long leg as well. I'm very, very impressed. Looking forward to seeing a lot more of him throughout the HBL PSL. Oh, so exciting to see yet another young gun come to the fore and put his hand up for his team today. And Waqar Yunus has run in to join us in the studio. He does bowl 140. He does bowl 140, 150. This bloke. Come on. I thought you said young gun, so you're coming to me. Okay. Carry on. The youngest. We're just talking about Saim Ayub. He was just brilliant today with the bat. And at one point, it really looked like him and Mohammad Harris were going to really take care of the run chase. Yeah, we heard about him. I mean, before this, what he's shown today, you know. He's changed his game a lot in the last couple of years. He was a very steady player, and suddenly in this last T20 home tournament, and he was outstanding. He played all these ramp shots, those cover drives and straight shots. I mean, he's got such a clean hands. He hits the ball really clean, and you know, runs quickly. So you know, can bat at any number. He's one of those utility cricketers and a decent fielder. Yeah, he was absolutely brilliant, wasn't he, Dooley? Him and Mohammad Harris, youth, but so much talent between the two of them. Yeah, and I like the sort of that effervescence of youth. You know, when they come out, there's nothing to lose. He's given an opportunity, and he took every one of those opportunities. So I want to see more of him. I want to see him develop a little bit more. He looks like he can play the quick bowling really well. How well does he use his feet to the spinners? Does he have the lap shots, the reverses, those sorts of things? So the more we see of this young man, I think, you know, the more we'll get to know of him.
the more impressed we may be, but I was very impressed tonight. I mean, you've got Isanola bowling genuine gas, like really good pace, and he came out, just sort of strode out, and there was one of Mark Butcher's pre-show cover drives that started things off for him, wasn't it? And from that moment on, you thought, this boy's got something. Next ball, he's right in behind a shortish delivery. So he had a little bit of composure about him as well as all those shots. So, as I say, you just look forward to seeing more of him. Not nervous at all. No, he didn't seem nervous at all. Normally, you know, youngster coming in at that number when team under pressure, scoring such a big total, he didn't look nervous at all. So that's a good sign. Yeah, he was absolutely brilliant. And unfortunately, when it comes to the Multan Sultans versus the Peshawar Zalmi, well, Zalmi fans look away now as we take a little look at our stat attack for the evening. It's not great. Well, it's the second worst defeat for the Zalmi against the Multan Sultans. They really can't get it up over them, unfortunately. I think it's something about 9-3 now when it comes to these. Yeah, Multan Sultan plays really well at their home ground. You know, last year we saw 3 games, they just cruised and they've beaten every side. As Zalmis, they've got a leg over them, and they really like playing against them. They enjoy that. They have this, that thing against them which really makes them play better cricket. They're a very fine side, and now they've signed some really quality batsmen in the middle. I mean, the middle powerhouse is just amazing. I mean, top Rizwan and of course Sean. At times they're a little bit slow, but that middle order really takes the game away from the opposition. It's interesting, isn't it, Julie? What is it about certain sides that just match up so well? And unfortunately for Peshawar Zalmi, the Sultans are just an absolute nightmare. Yeah, and you have a mental block. I mean, there's certain sides you come up against and you're like, oh no, not these guys again. You know, we haven't beaten them for 4 games, 5 straight games, and it's been that sort of case for the Zalmi coming up against the Sultans. And you didn't even see Kushdil Shah or Brathwaite tonight with the bat. You got a glimpse of Pollard. You know, this is the power that these guys have. The other thing I will say, yes, they bat genuinely to 7, but they use 7 bowling options, as you mentioned earlier, Aaron, and they've got all those bases covered. So when they need a bit of pace off, they need to slow the bowling up, they can bowl the Pollards and the Brathwaites. They've got quality spinners. They've got genuine gas. They've got every base covered, I think, and with Rilee Rossouw playing the way he is, I mean, sheepers, they are incredibly dangerous. Rizwan at the top. I wonder if they can find a way to, dare I say it, lose Shan Masood and get someone else at the top and see how things go. It's impossible, isn't it? Because he was so good last season and for many, many seasons for the Multan Sultans. Look, I don't think they need to do that at the moment because they're playing so well. Yes, they've got a couple more games grace. Yeah, yeah, true. He's played so well. Yes, he's not playing that well. They can afford that. They've got such a strong batting lineup. Even if he doesn't score, they'll cover it up. But yeah, you don't want him to not score or not really give that momentum in a crunch moment, in a important games. Yeah, plenty more to unpack on the other side of the break. Don't go anywhere. The Pitchside Studio will be back after the short break. Welcome back to Pitchside Studio. I'm Sikandar with you. Thank you to Aaron. My guests don't change. Still Waqar Yunus and Simon Dole. And we've got so much to talk about in match 5. Rilee Rossouw and then a couple of run-outs, big hits, 6s. It was a high-scoring game. So the top of that is the player of the match, and that's Rilee Rossouw. 75 today from him. Yeah, chatting to Rilee Rossouw earlier. I know you've had a chat to him as well, Sikandar. He has just been brilliant, coming from different conditions, approaching it very much in a similar way. But he is a class act, scores runs all around the world. He's very powerful, particularly severe against the spinners. He uses his feet well. If you get too tight, if you don't get him in the first 8 to 10 deliveries with that ball swinging back in, you're going to be in trouble. And the last 2 teams that have played him have felt that trouble to the max. Yeah, indeed. It's not the first time. Even the game before this, he was superb again. 78, not out in that match of 43 and won the game. I think second player of the match award. Waqar, I was talking to him. It's easier said than done. He just says, you know, it's just another game. But to come into a different place, different conditions and play as if you've never left the HBL PSL.
Yeah, he loves it here. He loves Multan Sultan. Every time I've seen him playing from Multan, he's been scoring runs. He's been a really, you know, core of the team. He's middle order. Him batting the way he bats, he's a man who will win you game from any sort of situation. Got 100 here also last year. He's a top class professional when it comes to sort of this league cricket, and unfortunately didn't really play for his country for that long, but yeah, he's doing the job for Multan Sultan. It's really amazing, you know, how we go out and you go there and read the pitch. And I was asking Rilee Rossouw, he said 160 was the score that we were targeting. Seriously? He actually said That's that. what they say to begin with. Yeah, well, yeah. I mean, I thought it was better. I thought it was a better looking surface. And I always think you bat first on good pitches. It was a fresh one. It didn't, to me, so the great thing, I had a little insight here, and just for those who don't know, when I went out there, the cover that is over the stump microphones at the back, that was off. So I was able to get into the clay. And just have a good look at the clay, and it was nice and moist, but it was very, very hard, and that to me tells you it's just going to skid on. It wasn't dry at all underneath, so when they take that off, they leave about a 3 or 4 inch bit of clay that sits right behind the stumps, and that's where we put the stump microphones and the cameras and all that sort of stuff that connect up inside the stumps, and it was nice and damp, but very, very hard. And I thought this is just going to play like a beautiful surface, and, and it did. Had a little bit of an inkling. Yeah. Okay, now there was a moment in the game where Saim Ayub and Haris were going great guns and the bowlers had no answers whatsoever how to get them out, and in came a run out, and that was a switched on moment. Well, one must praise Haris and Saim Ayub the way they batted. It was a wonderful throw. He had very awkward sort of situation, awkward sort of position to throw that ball. He had to really turn and aim stump and a bit, and bullseye. It was just beautiful throw, right on the money. And the most amazing thing was that he was moving towards his left to grab the ball and turn all the way around to throw it at the non-strikers. Bullseye, and that was one of the big wickets. But impressive performance from these two. Yeah, absolutely. I thought at one stage when Baba went, it was sort of I won't say it's a blessing, but it was like it opened the game up a little bit, and it was a surprise to me from both players. I think Haris, we know that he's going to be aggressive from ball one. You get that from him, but I was impressed with the youngster. We've talked a little bit about him already, and just the way he composed himself and the way he was at the crease. There's a lot to come from him and a lot to like about it. So if Baba can get going through the tournament, that's a fairly powerful top three, and they too have power. It's just, it's one of those situations when you're chasing 211 to win a game. Yep, it's a silly thing to say, I guess, but you either get close or you lose by a lot. Yeah, it's one of those situations chasing such a high score. It's either a cracking game or one team generally loses by a lot. Okay. I thought Multan Sultan did really. Multan Sultan did really well, because you could see when the pace on delivery, both of them were just very comfortable, and they were tonking the ball all over the place. What they did, they just brought in Brathwaite, they brought in Bollard, and the ball just like slow. Yeah. Okay, you make the pace, and it was hard. It was difficult on this pitch. Okay, lots to talk about this game, and of course something that Waqar pointed out in the afternoon, catching and fielding, compare the two sides today, all on the other side of the break. वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। अगर आप अभी सो के उठे हैं तो आपको बता दें 56 रन से जीत गया मुल्तान सुल्तान और 2 पॉइंट्स और हासिल कर लिए, 4 हो गए अब उनके पॉइंट्स टेबल पे, और मरीना भी उठ के आ गई हैं। मरीना से पूछेंगे कि आज के मैच ने आपको एंटरटेन किया कि नहीं किया, खासतौर पे जो नाम ऑफ कोर्स सब बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले, साइम अयूब, हारिस, रिली रोसो। बिल्कुल डेफिनेटली किया और बहुत अच्छा मैच हुआ, हाई स्कोरिंग मैच था, और उसमें ऑब्वियसली जो दूसरी टीम चेस कर रही होती है उस पर भी अलग प्रेशर होता है। जिस तरह का स्टार्ट लिया ज़ल्मी ने, डेफिनेटली साइम अयूब की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल T20 से हम देखते आ रहे हैं कि उन्होंने गेम अपनी बहुत चेंज की है, शॉट्स डेवलप किए हैं, और जिस तरह का एटीट्यूड है पहली बॉल से उन्हें होता है कि मुझे स्कोर करना है। और ऑब्वियसली हारिस से भी काफ़ी इंप्रेस्ड हुई हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई, अपनी जो एरियाज़ हैं उनको भी वेट किया कि वहाँ पे बॉल आए तो मैं खेलूँ, अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली। तो ऑब्वियसली जहाँ तक बैटिंग की बात है, दोनों टीम्स में बहुत अच्छा खेला। पुराने ज़माने में कोचेज़ अगर देखते हैं ऐसे ये नो लुक शॉट ऐसे करके तो बाहर निकाल देना था। हर एक टाइम होता है हर चीज़ का,
अब ग्रेट्स की बात करोगे तो जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, यूनुस, यूसुफ, आई मीन देयर सो मेनी ग्रेट प्लेयर, बट क्रिकेट इज चेंज ना, क्रिकेट बदल गई है, अब मॉडर्न क्रिकेट आ गई है, T20 क्रिकेट आ गई है, तो इस तरह की उल्टी टेढ़े मेढ़े शॉट्स तो देखेंगे आपको। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जब टेढ़े मेढ़े शॉट्स खेलेंगे तो विकेट्स भी गिरेंगी, और जब विकेट्स गिरेंगी तो फिर आपको प्रेशर आएगा। 10 के 10 खिलाड़ी आउट हुए ज़ल्मी के, एंटरटेन जरूर किया लेकिन बॉलर्स हावी हो गए आखिर में। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फॉलो द विकेट्स। टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा था और डेफिनेटली उन्हें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बॉल थी, सानुल्लाह ने स्टार्ट किया। थोड़ा सा इस पर मुझे हैरत हुई कि नया बॉल नहीं मिला। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रन आउट था, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे ये बहुत बड़ा धचका था ज़ल्मी के लिए, और प्रेस ऑन करते रहना था। थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान ने, ये ज़रूर कहूँगी कि उस तरीके से बॉलिंग नहीं कराई जो एक्सपेक्टेड थी, बट क्योंकि प्रेशर और स्कोरबोर्ड का प्रेशर था, चेजिंग थी, बड़ी शॉट्स की वजह से रिस्क लेना था ज़ल्मी के बैटर्स को। भी बहुत शानदार कैच था डेविड मिलर ने किया था, और वही बात है कि जब प्रेशर होता है तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, उसमें रिवॉर्ड भी मिलता है और आप विकेट भी गंवा बैठते हैं। सामा मीर का बहुत अच्छा स्पेल था, अच्छी ट्रैजेक्टरी के साथ इन्होंने बॉलिंग की है, पेस वेरिएशन भी की, और नकल बॉल भी हमें देखने को मिले। कार्लोस ब्रैथवेट जिन्होंने आज ज्वाइन किया था प्लेइंग 11 को, सानुल्लाह ओल्ड बॉल के साथ भी इन्होंने 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। इस टाइम पे जो है ज़ल्मी ऑलमोस्ट गेम से आउट हो चुका था, बट जहाँ तक फील्डिंग की भी बात हम ऑब्वियसली कर सकते हैं कि कुछ अच्छे कैचेस हुए, कुछ गिराए भी, बट विकेट बॉलिंग जो है एंड में बहुत सिंपल हो गई थी कि रूम नहीं देना, और उसकी वजह से एक अच्छा और यॉर्कर है सानुल्लाह की जानिब से। ओके सो ये देखिए हमने विकेट्स जो गिरी, इसमें खास चीज़ एक और थी, अगर दोनों टीमों का मवाजना किया जाए, और बाबर ने मेंशन भी किया पोस्ट मैच में कि उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही। जो चौके उन लोगों ने छोड़े, कैचेस तो इतने नहीं आए, लेकिन फील्डिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और बैक टू बैक एक गेम के गैप से ऑफ कोर्स खेल रहा है मुल्तान, लेकिन आज जिस तरह पोलार्ड डाइव लगा रहे थे, जिस तरह इनके रन आउट्स किए, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों टीमों में। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बाबर ने बिल्कुल सही बात की है। इनकी फील्डिंग आज बहुत ही ऑर्डिनरी थी, टांगों में से गेंदें जा रही थी, एक्स्ट्रा सिंगल्स दे रहे, और सबसे जो ख़राब चीज़ थी वो ये थी कि जो नो बॉल्स हैं, आई मीन अगर आप इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद और इतने क्रिकेट खेलने के बाद अभी भी आप यू नो द इम्पोर्टेंस के इस तरह के गेम में, T20 क्रिकेट में नो बॉल तो सबसे ख़राब बॉल है ना। आप मेरा मतलब आप फ्री हिट भी दे रहे हो, उस बॉल पे भी अगर चौका छक्का लग जाए तो आप तो बेसिकली गेम को बहुत पीछे ले जाते हैं ना अपनी टीम के लिए। तो आई थिंक ये इनको बिल्कुल गौर करना पड़ेगा। आई थॉट के पिछले मैच से सीखा होगा, लेकिन अभी तक नहीं सीखा। अच्छा, इन्होंने एक बात की थी कि अगली चीज़ जो आपको दिखाने वाला हूँ कि एहसानुल्लाह को नया बॉल नहीं दिया, खुर्रम शहजाद को प्रेफर किया वहाब के साथ। क्या आप भी थोड़ा सा हैरान थे, या दिस इज ओके, फर्स्ट चेंज सही है? एहसान आई थिंक एहसान को आप नया बॉल भी कराया जा सकता था, लेकिन उनका एक स्ट्रेटजी है कि वो एक पहले स्टार्ट लेफ्ट आर्मर से करते हैं। खुशदी शाह ने आज उनको जो कमी थी अपना क्या हुसैन की विद वेस्ट इंडियन लेफ्ट आर्म्स पे ना, उसको आपने नहीं खिलाया था, तो आपने एक ओवर उससे करवा लिया। आई थॉट ही बॉल 2 ओवर्स, एक छक्का ज़रूर लगा था, लेकिन अच्छे 2 ओवर जल्दी उन्होंने कर दिए, उससे भी काफ़ी थोड़ा सा पीछे कर दिया था गेम में। लेकिन ये एहसान इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। एहसानुल्लाह इज़ बीन आउटस्टैंडिंग जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा है। आपने भी मुझे नहीं बताया, मैंने एहसानुल्लाह को ज़ल्मी से खिला दिया। चलो कोई बात नहीं, इतने मैचेस होते हैं, हो जाते हैं। एहसानुल्लाह की बात हम कर रहे हैं, आज भी इन्होंने 150 प्लस बॉल कराए, 150.3। ये 17वां ओवर था, 5वीं गेंद थी, और नीशम थे बैटिंग पे। आइए देखते हैं। ये एहसानुल्लाह ने अगले दिन भी आपको दिखाया कि ही इज़ क्विक और ही इज़ गोना गेट क्विकर, और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा है कि परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं एहसानुल्लाह, मैं वक़ार से पूछना चाहूँगा कि इनकी लेंस को आपने किस तरह से देखा है, जो ऑन द शॉर्टर साइड कराते हैं पहले 2 मैचेस जिस तरह हमने देखे, एंड हाउ डू यू सी हिम प्रोग्रेसिंग? सिकंदर, इसको मैं पिछले 2-1 साल से देख रहा हूँ। इवन जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी आते थे, जब मैं भी कोच था, तब भी ये नेट बॉलिंग के लिए आते थे, एंड यू ऑलवेज प्रोमिसेस गुड पेस एंड बट कंट्रोल नहीं था, लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं था, बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, गिव हो जाता था, जल्दी क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते थे। वो आपने पिछले साल भी देखे। इस साल जो सबसे बड़ा फ़र्क जो नज़र आया वो यही है कि ही इज़ बिकम फिटर
और जब आप फिट होते हो तो फिर आपकी जो लाइन जो होती है वो भी बेहतर हो जाती है, बिकॉज आपकी वो जो आपको डर जो ख़त्म हो जाता है ना कि मुझे क्रैम्प्स आएंगे या मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, उसकी वजह से आई थिंक ये देखे गुड लेंथ या बिल्कुल फुल यॉर्कर लेंथ एंड देन शॉट। ये इनकी 10 विकेट्स हैं। वो 10 विकेट इसलिए इन सारी हैं क्योंकि जो शॉट है वो पूरा शॉट है, जो गुड लेंथ पे वो पूरा गिरा हुआ है, ऑड बॉल उनके जो है ना वो भी विकेटों को ही लग रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज द रीजन ही इज गेटिंग विकेट्स, बिकॉज ही इज बॉलिंग नाइस एंड स्ट्रेट, और जो पीछे पूरा करता है तो पूरा बाउंसर करता है, इज नॉट लीविंग हाफ एंड हाफ। आई थिंक दैट इज द डिफरेंस जो मैंने पिछले 2 सालों में और अब मैं उसमें देखा, और कोर्स की रिस्क बहुत आला लगती है। उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया। आप देखें ना, ये इनको ऑलरेडी अभी इस स्टेज पे एचबीएल पीएसएल में फजल महमूद कैप मिल गई है, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर की होती है। 10 विकेट्स इनकी हो गई मरीना ऑलरेडी, और उन्होंने आई थिंक टोटली फॉक्स कर दिया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, तो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या, बहुत जल्दी चीजें हुई। बिल्कुल, और इसी वजह से मैं थोड़ा आज सरप्राइज थी क्योंकि नया बॉल नहीं दिया। आपके एक बॉलर जिसका कॉन्फिडेंस इतना हाई है, 5 विकेटें ली हुई हैं, जो बैटर है उसके भी माइंड में होगा कि इसने पिछले मैच में 5 विकेटें ली हैं। नए बॉल पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक ये यूटिलाइज करना चाहिए था, क्योंकि पुराने बॉल फिर ज़्यादा तो पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी पेस जो है वो इस सरफेस पे बैटर्स के लिए आइडियल हो जाती है। तो आई थिंक ये यूटिलाइज करना चाहिए जब एक बॉलर आपका स्पेशली T20 में फॉर्म में हो। अच्छा, जो फील्डिंग का जिक्र किया, अभी वकार से बात हुई और मरीना भी कह रही थी सबके फील्डिंग का कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है किसी भी फॉर्मेट में, बट इसमें तो चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती हैं। सो सेफ हैंड्स की अगर बात करें तो ऑफकोर्स आज जो कैच लिया था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी रॉबिन पावल की, मिलर ने जो कैच लिया वो सेफ हैंड्स है। बहुत उम्दा कैच था, और ये बहुत क्रूशल कैच भी था क्योंकि जिस तरह हिटिंग कर रहे थे, आई थिंक ये बहुत जल्दी जज किया कि टिप कर रहा है बॉल, फुल स्प्रिंट की और एंड पे डाइव की और क्लेम भी किया उन्होंने। ये आई थिंक टर्निंग पॉइंट भी था मैच के लिए, स्पेशली क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग जारी थी। बहुत ही शानदार कैच। अच्छा, इसका रीजन हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल्स, मैं फॉरेन प्लेयर्स नहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करूं जो पाकिस्तान के भी हैं, जो इतना बड़े फुल हाउस के सामने और ऐसे स्टेज पे काफ़ी अरसे से नहीं खेले हैं, ये फील्डिंग एस्पेक्ट्स, प्रेशर, कैचेस ड्रॉप कर होना, मे बी लूजिंग द बॉल इन द बैकग्राउंड, ये मैं उनको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, रीजन हो सकता है। आप क्वेश्चन दे रहे हैं उनको। चलो मैं दे देता हूँ थोड़ा बहुत। नहीं, क्वेश्चन इसलिए आप दे रहे हैं कि ऑफ कोर्स उनसे एक्सपेक्टेशन होती है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और वो दे बीन अराउंड इस तरह के क्राउड के सामने। आप बच्चों को जो नए आते हैं या उनके सामने, या एहसान उल्लाह जैसे उसने कैच गिराया तो वो नर्वस है, यू कैन टेल दैट, ठीक है ना। लेकिन अगर वहाब जैसा कैच गिराया या नीशम जैसा बंदा कैच गिराया, अगर हाथ को नहीं लग रहा तो देन मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर। इट्स नॉट कि जी आपको ये आपको प्रेशर जो क्राउड का डिस्टर्ब कर रहा है, इट्स जस्ट दैट यू नॉट रियली, आइदर यू हैवंट रियली प्रैक्टिस इनफ, और या फिर आपको यू नॉट रियली साइटिंग, यू हैव टू बी देयर, यू व्हाट टू बी। T20 क्रिकेट इतनी तेज चलती है और इतनी फास्ट मूविंग गेम है कि इसमें आप कहीं पे भी आंख बंद नहीं कर सकते, आप ब्लिंक भी नहीं कर सकते। यू हैव टू बी रियली अलर्ट एवरी डिलीवरी, देयर इज ओनली 120 डिलीवरीज। यहाँ पे 2 मैच हो गए हैं आउट ऑफ 3 मुल्तान के जो चेस करके नहीं जीत पाए, फिर भी यहाँ चेस करना चाहते हैं लोग टॉस जीत के। ऐसा लग रहा है कि एक डिसाइडेड होता है। डू यू रियली थिंक के जो कैप्टन्स हैं वो चीज़ें रीड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या एक रन ऑफ द मिल चल रहा है कि जी चेस इज इजी, टारगेट पता होगा, ड्यू आ जाएगी, फिर वो रिजल्ट में तो नहीं दिख रहा? देखिए, इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो ऑब्वियसली टारगेट जब सामने लगा होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स, बैटिंग स्ट्रेंथ्स को देख के कैलकुलेट करके जा सकते हैं, बट आई थिंक कि जो दूसरी टीम है उसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ को भी देखना बहुत ज़रूरी है, और अपने जो बैटर्स हैं उनको यूटिलाइज और रोटेट करना भी बहुत ज़रूरी बनता है। ये सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक कि ब्लाइंड साइडेड नहीं जाना चाहिए कि अगर आप एक ही तरह से कंफर्टेबल हैं या आप सिर्फ इसको वॉच कर रहे हैं कि जी टारगेट होगा तो आप किसी ना किसी तरह कैचअप कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह की बाकी टीम्स है, बॉलिंग अटैक्स बहुत अच्छे हैं। फील्डिंग पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि अभी तक नहीं स्टैंडर्ड नज़र आया, लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो आपको अब T20 गेम में, क्योंकि एक बैड डिसीजन आपका पूरा मैच लेके जा सकता है, ये फैक्टर्स नजर में रखने जरूरी हैं। जी ओके, चलिए वकार से हम बात करेंगे इसी बारे में ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक है, ज्यादा दूर ना जाइएगा टीवी सेट से। वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। 56 के मार्जिन से मुल्तान सुल्तान ने आज पेशावर ज़ल्मी को हराया। पहला एनकाउंटर था इन दोनों टीमों का यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, और आज खचा खच भरा हुआ था क्राउड। आई थिंक मुझे तो फील हुआ कि ओपनिंग से ज्यादा लोग थे आज, शायद वीकेंड था मे बी। फ्राइडे में प्रॉब्ली लोगों ने काम खत्म किया है, देयर इज नो बेटर एंटरटेनमेंट अगर इस तरह का
आप स्टेडियम में आए और माहौल इस तरह का बना, और मुल्तान सुल्तान या मुल्तान सिटी ने या इस रीजन ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। लास्ट ईयर भी इतना ही भरता था। आई थिंक छोटे सेंटर्स में आप जब भी जाएंगे आपको इसी तरह का क्राउड मिलेगा, क्योंकि लोग बहुत सारे स्टाफ्ड हुए हैं, भूखे हैं, उन्होंने कभी बड़े अरसे से क्रिकेट देखी नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर कि यहाँ आए हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम गो टू फैसलाबाद, गो टू सियालकोट और समवेयर एल्स। आई मीन it will be great for क्रिकेट को लेके जाना चाहिए छोटे शहरों में। बाबर आजम भी अट्रैक्शन थे ना। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। हाँ, ऑफ कोर्स वीकेंड भी फैक्टर है, बाबर आजम भी फैक्टर है। चलिए, व्हाट डिड द फैंस हैव टू से? बड़ा एंजॉय किया, फुल हाउस, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। लेट्स जॉइन देम एंड लेट्स लिसन टू व्हाट द इमोशंस थे। आज रिजवान ने फिर साबित किया कि वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, और आज बहुत ज़्यादा स्कोर बना के छक्के चौके की बारिश करके हमने ये भी साबित कर दिया कि दुनिया क्रिकेट का सबसे जो बड़ा ब्रांड है ना वो पाकिस्तान सुपर लीग है, और वी प्राउड ऑफ यू। फर्स्ट मैच तो बहुत एंजॉय किया पेशावर ज़ल्मी का, लेकिन आज थोड़ी सी हार्ड लक हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बहुत अच्छा गुजरा मेरा पीएसएल का मैच, और जो शॉट मारा वो भी बहुत अच्छा था। नया टैलेंट जो उभर के आ रहा है हमारे सामने, खासकर हमारे लिए हारिस, एहसानुल्लाह, साइम अयूब, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, मतलब कि एक पाकिस्तान को नया फ्यूचर मिल गया। एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। दोनों अपनी टीमें, जो जीतेगा वो ही हमारी टीम है, तो पीएसएल को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ना सिर्फ होम टीम अपनी मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस को प्रेस कर रही है, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी, साइम अयूब का जिक्र हुआ, ऑफ कोर्स बाबर आजम का बताया मरीना, लोग देखने आए थे, तो एक पूरा पैकेज मिला लोगों को, जिसे कहते हैं ना सही मायनों में पैसा वसूल। अच्छा, जब मैचअप्स होते हैं, एक बॉलर 5 विकेट्स ले जाए, 150 पे कर रहा हो, फिर दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आ जाए, तो फिर मैचअप बनता है मसालेदार मोमेंट में। आइए देखते हैं इसको। जब बॉलर हावी होता है ना, या हाई होता है, या उसका कॉन्फिडेंस इस तरह का होता है, वो फिक्र नहीं कर रहा होता है वो किस तरह के कौन से बैट्समैन को बॉलिंग, और परफेक्ट यॉर्कर, ग्रेट लेंथ और गुड पेस। बड़ी विकेट थी यहाँ पर। आई थिंक मोर देन द विकेट, ये आप देखें, उसके बाद में तस्वीर खिंचवाई है उनके साथ उनकी विकेट लेने के बाद। देखिए, वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो रहता है और रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट होगा मरीना, एक ऐसी विकेट हासिल करना। ऑफ कोर्स एक प्लेयर की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने 5 विकेट तो ली हैं, लेकिन क्यों ना मैं ये विकेट भी हासिल करूं, अपने कहते हैं ना एक शेल्फ में ये यादगार रखूं। बिल्कुल, बहुत बड़ी ये मोमेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बाबर आजम दुनिया जानती है कि कितने आला बैटर हैं। अपेरेंटली कोई वीकनेस नजर नहीं आती, तो बॉलर के माइंड में भी होता है कि आप कहाँ पे उनको ट्रैप करेंगे, क्योंकि इनोवेशन भी है, टेक्निक भी है, टेम्परामेंट भी है, तो ऑब्वियसली बेस्ट डिलीवरी सोचता है बॉलर कि मैं उनको करूं और उसके बाद उनकी विकेट हासिल करूं, तो एक एक्स्ट्रा बूस्ट है, एक अलग से कहते हैं ना उनके ताज सज जाता है कि आपने इनकी भी विकेट ली हुई है। देखिए, पीएसएल, एचपीएल, पीएसएल जो है ना, वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं आपको लाता, एक नया स्टाइल और एक नई चीज़ भी लेके आता है जो आपको नज़र आती है। वो ये है कि जैसे आज आप देखा एहसान ने आउट किया, देन यू सॉ हिम टेकिंग फोटो विद हिम, दैट रिस्पेक्ट एलिमेंट। इसी तरीके से आपने आई डोंट नो 2-3 सीजन पहले की बात है, जब शायद अफरीदी खेल रहे थे तो हारिस ने आउट किया था, तो हाथ जोड़े थे। सो दैट आल्सो, दैट रियली, दैट फ्लेवर्स दिस टूर्नामेंट। दिस इज एन अमेजिंग टूर्नामेंट विदाउट अ डाउट। चलिए, बहुत टाइम कम रह गया है, जल्दी से पॉइंट्स टेबल देखते हैं कैसा है, व्हाट डज इट से। हमारे 5 मैचेस हो चुके हैं, मुल्तान सुल्तान लीड कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनका नेट रन रेट बड़ा हेल्दी हो गया 2 बड़ी जीतों के बाद, लेकिन इस्लामाबाद जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। और अब कल का जो मुकाबला है, इट विल बी कराची वर्सेस क्वेटा, दैट इज द बॉटम ऑफ द टेबल ऑफ कोर्स, and that is something, an encounter which will be very important for these two sides because nobody likes to be at the bottom of any table. So match 6 ये है जो कि खेला जाएगा HBL PSL में, कराची किंग्स versus क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कराची के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कराची 2 मैच हार चुकी है, क्वेटा 1 हारी है, लेकिन ये है कि बड़ा मैच है, बड़ा मैच है ये, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच मरीना, थैंक यू वकार। Another brilliant day of action here in HBL PSL. Time for us to seek your goodbye, and you'll be joined by another team of ours in Karachi for that encounter, which is match 6. Until then, good night and goodbye.
आग लगे यूं ही मैदान सजे खेल में खोने लगे शोर शराबा होने लगे 14th HBL PSL half century for Mohamed Rizwan. Oh, there you go, 50 for Rilee Rossouw. That is high class. Leading run scorer in the PSL is on his way back. Picked up and gone all the way for 6. 50 up for Saim Ayub. Another wicket. Gone. This game is done.